Hello and welcome to this new tutorial. With this tutorial, we are starting a new series of understanding the concepts in political science. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और इस ट्यूटोरियल द्वारा हम न्यू सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज रहेगी Understanding the Concepts in Political Science. And to start with, we have authority as a concept. So let us understand the concept of authority. Well, authority can most simply be defined as legitimate power. And why legitimate power? Because legitimate power comes from having a position of power in an organization, such as being the boss or key member of leadership team. For instance, this power comes when employee in the organization recognize the authority of the individual. So, power is the ability to influence the behavior of others, and authority is the one who possesses this power. Thus, authority is therefore based on acknowledged duty to obey rather than on any form of coercion or manipulation. In this sense, authority is a power cloaked in legitimacy or rightfulness. Further, Max Weber distinguished between the three different kinds of authority which are based on the different grounds upon which obedience can be established. First, traditional authority, which has its roots in history. Second, charismatic authority, which comes from personalities. And legal rational authority, which has a ground in a set of impersonal rule, or in short, authority backed by rule of the law or constitutions. If you need more further readings on different kinds of authority, then please go to this tutorial which I have prepared way back, and the link to this tutorial you'll find in the description box below, as well as on I button on top. So when we talk about authority can be therefore defined as a legitimate power. And therefore, when we talk about legitimate power, then this legitimate power comes from the position of the power which you have in the organization. Example, if you are a boss, then obviously you'll have the most important authority, and that authority will have a legitimate power because that power comes with being a boss of that organization. Therefore, we need to understand with an example that when employee in the organization recognize the authority of the individual, it is only because that employee has the backing from the company, from the organization, with legitimate authority. Therefore, such employees and the power which they have enable them to influence the behavior of others. And it is all because that authority has the power. That authority possesses this power with legitimate backing. So one need to understand that authority of any form, whether it is in the organization or whether it is in any political party or whether it is in any state or a society, that authority simply can be defined because that authority has legitimate power. And that legitimate power comes only because that person is in that position of power, and that position of power makes him or her a legitimate authority. And once he becomes a legitimate authority, then obviously he or she would have the power or the ability to influence the behavior of others. And this is how
authority can be understood, or this is what the concept of authority is all about. And therefore, further, Max Weber have made a very categorically have distinguished authority in three different kinds, as we have talked about. That is traditional authority, which has its own roots in the history, that you receive authority traditionally, and such kind of traditional authority you'll find in the society or a state which is ruled by kings or monarchy, because in monarchy power is transferred traditionally. The authority is transferred traditionally because of existing norms or values. Second, we have a charismatic authority, and this is associated especially in the third world countries where institutions are not so very powerful, and that individual authority becomes the face of the country, and people, when they don't have the institution, when they don't have strong institution, they look at their political leader, and that political leader has the power, has this charismatic authority to influence the others as well as state. And the legal rational authority has the backing because of the constitution, because of the rule of the law, and you receive this authority legally and rationally because of the existing constitution. So this is all about understanding authority or the concept of authority. जब हम authority के बारे में समझना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि जो अथॉरिटी है उसको एक सिंपल भाषा में अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी एक पोजीशन है जहाँ पर आपको लेजिटिमेट पावर मिलती है। लेजिटिमेट पावर मतलब लीगली पावर जो एक अथॉरिटी को मिलता है। और ये लेजिटिमेट पावर क्यों मिलती है? क्योंकि आप एज अ अथॉरिटी एक पोजीशन लेते हैं, आपको एक पोजीशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर किसी कंपनी में, या फिर आप एग्जांपल ले लो किसी पॉलिटिकल पार्टी में। और जब आपको वो पोजीशन मिलती है तो आप एक अथॉरिटी बनते हैं, आप एक बॉस बनते हैं। और जब आप बॉस बनते हैं विद ऑल लेजिटिमेट पावर, तो आपके पास एक स्पेशल पावर मिलता है जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बॉस अपॉइंट होते हैं तो बॉस होने के नाते या फिर एक बॉस होने के कारण आप हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ आपको रिकग्नाइज करते हैं एज अ अथॉरिटी। और उसी के कारण आपके पास एक एबिलिटी होती है, आपके पास एक पावर होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करें, उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि आप एक अथॉरिटी है, आपके पास एक पावर है। अगर आपके पास वो पावर नहीं है तो आपको एम्प्लॉय रिकग्नाइज भी नहीं करेगी या फिर आपकी बात भी नहीं सुनेगी। तो इसीलिए जो अथॉरिटी होता है, ये अथॉरिटी वो सारे पावर अपने पास रखता है या फिर वो सारे पावर यूज़ करता है क्योंकि वो एक पोजीशन पे होता है और यही पोजीशन उसको रिस्पेक्ट देती है। यही पोजीशन के कारण जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको रिकग्नाइज करते हैं और इसी पावर के कारण आपके पास वो एबिलिटी होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करें, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। और यही जो एग्जाम्पल है कि सोसाइटी में जो भी कोई अथॉरिटी होता है उसको एक लेजिटिमेट पावर मिलती है और उसी लेजिटिमेट पावर के सहारे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बनता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री हो, नेशन हो, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, और फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम्पल। तो एक लेजिटिमेट पावर मिलती है और लेजिटिमेट पावर के कारण दैट पर्टिकुलर
authority has the ability to influence the behavior of others. So in short, authority is the one who has the legitimate power to influence the behavior of others, and others obviously going to recognize him because he possesses that power. आगे मैक्स वेबर जो है बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने अथॉरिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिसकी जो नींव है, इसकी जो बुनियाद है वो हिस्ट्री से हमको मिलती है, जहाँ पर एक ज़माना था जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस दौरान जो पावर था एक राजा का दूसरे राजा की तरफ, या फिर एक राजा के बाद जब दूसरा कोई राजा बनता था, तो वो जो सारे पावर्स थे वो ट्रेडिशनली दूसरे राजा के पास ऑन होते थे। सो ट्रेडिशनली ये उनको अथॉरिटी मिलती थी। दूसरा जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, ये अमूमन हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखा है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के तौर पर उभर आते हैं। और थर्ड जो है वो है लीगल और रैशनल अथॉरिटी। दिस इज़ बेसिकली यू फाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल और रूल ऑफ द स्टेट में, जहाँ पर अथॉरिटी आपको लीगली और रैशनली कानून के हिसाब से मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the understanding the concept of authority, and I hope you have understood this concept of authority. I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.